And like my mother always told me that they present you the best, you know. She saw me on the Yatpia set, she came there and she said, nobody has styled you like this ever when she saw me. So I truly believe that they present me the best and thank you so much for it. आंखों में दिख रहा है इस समय how emotional you are. So मुझे बोलो अब एक तरीके से this is the culmination और of course 20th October को when we'll get to see अभी क्या चल रहा है दिमाग में? I do feel very, very emotional today. Yes. And it's been a journey of 1.5 years. I'm so thankful that Radhika ji and Vinay ji, my directors, got me this role of Ladli. And I hope audience loves me and relates to me. Thank you. And I think it's been a long journey in this city, like Radhika ji said, where I came here as a teenager, and I'm thankful to my parents who allowed me to come here without knowing a single soul in the city. And you know how this journey took me. I got married. I got my first film, actually, Ab Tumhare Hawale, through an audition, and then I just got married before the release of the film. And then I went into direction, directed, and finally I started acting again. And now this film is extremely important for me because the role that my directors wrote for me, it was based on the real me. It's the real me. That's the real Divya. That's the real Divya who after 10:30 will ask you ek samosa, something thanda, and then she'll say a Ray-Ban. Okay. That's the real Divya. And I think it's मतलब जिंदगी में कैसे तार जुड़ते हैं, बिकॉज जब मैं दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी और ऑडिशन देने जाती थी, तब मैं अपने बिगनिंग ऑडिशन फेस के लिए आई थी और मुझे राधिका जी और विनय जी ने सिलेक्ट किया था जब मैं बहुत छोटी थी, शायद बहुत 14 साल की थी, फॉर फाल्गुनी पाठक वीडियो. एंड दैट वाज माय फर्स्ट वर्क ऑन स्क्रीन एंड दिस इज हियर दे आर. एंड लाइक माय मदर ऑलवेज टोल्ड मी दैट they present you the best, you know. She saw me on the Yatpia set, she came there and she said, nobody has styled you like this ever when she saw me. So I truly believe that they present me the best and thank you so much for it. Yes. Itna sara pyar, of course, the way they have presented you and of course the way you've presented yourself. वो जो talent है वो अपने आप के लिए बोल रहा है. You have to talk to us about that emotional thing because इसमें सिर्फ एक flat चीज नहीं है. There are so many emotions. खुश है, गम है, दुखी है. Everything is there. So वो पूरा spectrum को आपने cover किया है. What do you have to say on that? I don't think I can say any more. You should ask everybody else now. We'll come back to you because this is a very important question. कितनी मेहनत गई मेरे को पूछना है. अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा health conscious कौन है? Are you like that? Yash, like तीनों में से? It's not like तीनों में से. I think Meezaan is also pretty health conscious. हाँ. So it's been like किसके कैसे scenes है. हाँ. Depending on that, right. We watch our intake of carbs. Right. I can say that. Yeah. मैं डर गया यहाँ दूर खड़ा हूँ इतना. अभी मुझे यश ये बताओ वो जो intensity है ना अपने character में, that is something different. As I said, emotions का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है. What do you have to say on that? I think this entire credit goes to Vinay sir because he has been keeping a track of everything right from my body language to how I should look or how I should even move my single facial muscle. So I think the entire credit goes to... Sorry, I'll cover this up. It goes to sir and ma'am. Ma'am has been always like the principal on our set, the headmaster. Kneel down now. So she's been like that, but they have been really sweet and it's because of them whatever has come out and it looks absolutely magical like you said before. Indeed. Meezaan and Pearl, इतना ही जानना चाहूंगा अभी जब ये प्रमोशनल टूर पे निकले हुए हो आप और द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गाइस आर गेटिंग उसके ऊपर क्या कहना है. फैंस आई सॉ इट लाइक फ्रेंजी जो बोला जाता है ना वो देखने को मिल रही है. ऑफ कोर्स यू वर देयर फॉर MotoGP फ्लैग ऑफ. जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड द अमाउंट ऑफ लव दैट वी गॉट फ्रॉम एवरीबडी. इवन जो रिएक्शंस मिले जैसे हम अभी दिल्ली गए थे फॉर MotoGP. सो वी मेट अ फ्यू पीपल जो रैंडमली हमारे पास आए. उन्होंने कहा कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया and I listen to it with my wife every day or with my sister or whatever. There are people of all age groups who are connecting with some part of the film and I think that's what's
giving us validation, and we're feeling content with the kind of work that we've put out. I think it's been a great response, and there's still more to go, still more to see. आज तो trailer आया, अभी थोड़े और गाने बाहर आना बाकी हैं. We have a lot of content to put out there, and it's going great, and the reaction's been great, and just all we can do is pray and hope for the best. Absolutely, and each and every unit जो कि इस फिल्म से जुड़ा हमने देखा है, उसको इतना सारा प्यार ऑलरेडी मिल रहा है. पर्ल, क्या कहना चाहेंगे? पर्ल, पर्ल, दिल के पास रहते हो सबके. Yes, of course. Thank you so much first of all. आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और जितने भी हम लोगों ने सिटी टूर्स किए सब जगह बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला एंड आई एम रियली नर्वस एंड हैप्पी. ये ट्रेलर देखने के बाद भी आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई आल्सो लव हिम. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. And Warina, this one's for you. हाँ जी. हाँ पूरे यहीं रहेंगे अभी, चिंता नहीं है. So Warina, for you, your journey with this amazing cast and crew, of course, the director duo कमाल के, Divya and Meezaan, Pearl, Yash. How was it like इनके संग interact करना, chill करना, काम करना? सेट्स पे हमने चिल बहुत कम किया है, ठीक है. मैंने स्पेशली कम किया है. आई मीन यार किसी ने नहीं किया. किसी ने नहीं किया. बिकॉज मैम इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. Do I look strict? Yes, she does. but amazing directors. Their attention to detail, मतलब काम करके मजा आ गया. You can see the output. Thank you. All I can say, as she has said, के presentation में इनके मुकाबले मतलब nobody, कोई नहीं है. And the way they have presented all of us. Yeah, I want to say thank you for that. Thank you for being Thank you so part much. of this whole journey. Thank you for sharing that. And Divya, as we said, वो emotional graph जो है पूरा, उसको बड़े बड़े बखूबी आपने यहाँ पे निभाया है. I know you're pretty emotional right now, so we'll come to that. लेकिन उससे पहले I think we should take the media questions. What do you guys say? एक second. Before that, I think. Just a sec, guys. एक second. Yeah. Mizan, what did you say? We have more songs to come, right? Yes, Yes. exactly. We have Speaking few more of songs, where is my song? It's coming. No. No, but we have Sachet and Parampara here. today, so we Wait, can't go Yeah. ahead without them singing a few So lines. we Sir, can't be just मैं leave answering, कर right? We should be Please. saying at the audience and get those guys on stage. Sanchit! Just want to say the film is looking really, really beautiful. Congratulations to each and everyone. And we are glad that we are part of this Check. beautiful, beautiful film. Check. Can you guys hear me? Less, thoda sa volume, please. Check. First of all, thank you so much, each one of you. टाइम का क्रंच आजकल सभी के पास है, बट आप सभी लोग टाइम निकाल के आज इधर आए हैं हमारे को सुनने, ये ट्रेलर देखने. थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस. एंड सेकंड ऑफ ऑल, वी फील सो हैप्पी दैट इतनी बड़ी लेगेसी यारियां की 2014 एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9 years. जब हमने पहला एल्बम जो आपने डायरेक्ट किया था, जब हमने सुना था, वो बहुत ह्यूज एल्बम रहा था अपने टाइम का. और उसके बाद भी नाउ बीइंग हियर, स्टैंडिंग हियर, यारियां 2 लेगेसी, वी आर पार्ट ऑफ दिस एल्बम. इट्स सच एन ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस. जब हम लोग स्कूल में थे, है ना? जब हम लोग स्कूल में थे तब देखा था. बट Okay, so I'll just sing few lines जो हमने गाया भी है. So जिसको आता होगा थोड़ा बहुत साथ दे दीजिएगा. कटघरे में तो हम ही लोग खड़े हैं अभी. बट थोड़ा फॉर्मल नहीं रखते हैं इसको, थोड़ा सा फ्रेंडली बनाते हैं. एंड इफ यू नो द सॉन्ग, प्लीज सिंग विद अस गाइस. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राह. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम. It's your turn. So
थैंक यू सो मच वंस अगेन. मैंने एक बहुत प्यारा सा गाना गाया. मेरे ख्याल से वो गाने से ज़्यादा एक ठुमरी है, क्योंकि मैंने इसको जितनी बार गाया मुझे लगा इसके बहुत लेयर्स हैं इस सॉन्ग के. दिस सॉन्ग इज कॉल्ड काजल बिंदिया. एंड मैं It's out थोड़ा on the, the album is out. I think it's there in the jukebox as well. Yeah, so I'll sing 2-3 lines of that song. Okay. काजल बिंदिया सब सुख छूटे, तेरे बिन सब तारे टूटे. नाना ननी है पहले जहाँ था, तेरे बिना सब तारे रूठे. बिन तारों के वो बातें बोलोगे किससे मोरे पिया. जो तू रांझा रोया संग हीर भी रोए. जो तू रांझा रोया, जो तू रांझा रोया संग हीर भी रोए. जो तू रांझा. थैंक यू सो मच. प्रॉमिस कीजिए. कमाल है यार. सचेत परंपरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. You know, we'll quickly talk about this, that T-series, when we talk about T-series as a production studio, या music. And of course, Vinay sir और राधिका जी की भी अगर बात करें, they've always talked about music, कि कितना important part है हम सबके लिए. तो यहाँ पे आपकी journey भी एक तरीके से वो breakthrough था कबीर सिंह, और तब से लेके अब तक you guys have not looked back, और वैसा कभी भी नहीं होगा. Quickly, if you had to talk to us about T-series के साथ आपकी collaboration. I think T-series is a family. इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है. परिवार है. भूषण सर एंड दिव्या मैम. आई थिंक उनसे कुछ भी कहना, वो बातें समझना, म्यूज़िक की इतनी जानकारी रखना, और जिस प्रकार का म्यूज़िक हम लोग चाहते हैं वैसा बना के इफ़ यू कैन रिलीज दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. आजकल सिंगल का भी काफ़ी दौर है. सो आई थिंक ही इज़ टोटली सपोर्टिव एंड आई थिंक बस मुझे मैं ये बोलूँगी, जो गुलशन सर से शुरू हुआ, फिर भूषण सर ने इसको आगे लेके गए. इट नीड्स अ लॉट ऑफ पावर, इट नीड्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस to maintain this legacy for so many years, and I kudos to, and big clap, round of applause for T-series and family. I would say first of all thanks to this lovely cast, and they have been on the road since last 1 month, and more importantly when it started all, Radhika and I had a script which was all about youngsters and their trial and tribulation in this city of ours, which is Bombay. Yeah. And so we were looking out for a cast which goes through this whole process. And sometimes we found them in Bombay, sometimes we didn't. So we had Yash from Calcutta, and then we were looking out for around us, and then we had Pearl, who's a television superstar for all the work that he has done. And Meezaan, what do we say? I will say, if more I'll say, they'll say it is nepotism. But well, he is this young film family boy. And Divya, of course, has been a long association of ours with Divya, because it started like some 15 years back when we did a song together. And Warina, of course, we all. She came to office and she said actually, if you'll give me the song which Sachit has sung, then I'm doing the film. Otherwise, I'm not doing the film. So I said, then well, we played the song and we just kept it a secret whether she'll get it or not. But then she didn't get it, but we got her in the film. So that was Warina's backstory on the film. Right. So it's lovely to have them all, and they've done some great work in the film. Right. Yeah, well, all I can say is I'm really nervous. But I'm very thankful for all of you all for coming. I'm thankful for the way everybody's responded to the songs in our film, to our trailer. We were what you call a miniature perfect film. I feel we were a small film, but we put in a lot of energy, we put in a lot of effort, and the response to all the songs, to the visuals, to all of them who have been touring the country has been phenomenal. And we just hope that the love continues, and 20th October we see everybody out in full house supporting us
in this endeavor, the way they have supported us on all our songs and trended it on every platform there is. And so we are very, very grateful to all of you all who are here. कैसा लगा? You're asking me? Yes, I'm asking you. I कैसा haven't लगा? slept. I'm nervous. Ask all of them. What is your review? Thank you. Where is sir? That's important. It is important, but of course, आपको कैसा लगा? If you had to, judge her on her performance, चलो. आधा director. I'll ask my cast. Radhika ma'am is nervous. What do you think? They're shaking their heads. Yeah. Whatever we saw on that big screen is magical. As I said, emotions और बड़ा rooted सा है. लग रहा है कि हाँ बड़ा relatable है, fresh है at the same time. How do you manage to show Mumbai, Amchi Mumbai, जिसको हम रोज देखते इतना अलग अंदाज में? It's like ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, but of course we've been there, we've traveled in that local. BEST में भी हमने travel किया है, Marine Drive देखा है, but जो यहाँ दिख रहा है वो इतना different कैसे है? किसको जाएगा इसका credit? Frankly, if you ask me, Bombay City. I came to the city when I was 20 years old with 500 rupees in my pocket. It has been the kindest, loveliest, most wonderful. देखो मेरे आंखों में आंसू आता है when I talk about Bombay City. I love the city. Vinay and I adore the city. We love to shoot here. तो हम जिधर भी खड़े होते हैं ना, it is just it's a love story of ours. हम इतना प्यार करते हैं शहर से. हम न्यूयॉर्क जाएं, लंदन जाएं, कहीं भी नहीं यार बॉम्बे जाके शूट करते हैं. So I think it's just that chemistry, because when you really, really adore somebody or something so much, so it's just we're just crazy about Bombay City. Right. और आपने कहा when you were 20, अभी 5 साल में आपने इतना सब कुछ 5 पा लिया नहीं इस है, साल 20 में। साल हो तो गए। जोरदार तालियां 20 राधिका साल के हो लिए। गए, 5 साल में नहीं। she's achieved बहुत so much। साल हो गए। मैंने सर प्लीज मुझे बहुत साल हो बताएं, गए। लास्ट टाइम we talked about cousins by blood, friends by choice। इस समय ना वो थोड़ा सा अलग हो गई है कहानी। The scenario has changed। उनके बीच दीवार दरार आ गई है। So ये क्या चल रहा है? ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। Actually, it's the story of, like I said last time, cousins. So it's got Divya as the sister and Meezaan and Pearl as the brothers. And when they are all three of them live in Simla, and then they come to Bombay due to various circumstances. And then how the life takes over. So Divya gets married to Yash's character in the film. Yeah. And I said in the film, I have to go back to Nannuji. I have to meet Bhushanji. So it's only about film. So they belong to a certain strata of society in Bombay. Yeah. They reflect a particular lifestyle of Bombay. And then Pearl belongs to a certain, which is the local trains. Like he said, 7.5 ki local, yahan aadmi nahi chicken hai. So that's where the Pearl's journey goes into. And Meezaan works in a food delivery company. So you see the streets of Bombay, and you see those by-lanes of Bombay, which we all live and love. So that's how the whole city is depicted in the thing. And then, of course, what Bombay brings to us. Like you said, it gives lots of love, lots of affection, and then it gives Lots of pain also. It does। and मीठा दर्द। We can call it the sweet। Yeah। and that's the episode which is the second half of the film, where Warina plays a very important role in giving pain to a lot of people in the film. So that's where the conflict of the film is, and that's the And talking about her character, अभी वरीना के चक्कर में बड़े सारे लोग ऐसा BEST के बाहर हाथ निकालने वाले हैं। कोशिश करेंगे काश कोई हमारा हाथ भी पकड़ ले। और अगर फिर वरीना है वो कार में तो फिर हाथ निकाल के हिम्मत कर लेनी वो चाहिए. जो कंडक्टर अंकल डांट लगाएंगे ना, उसको कौन झेलेगा वहां पे? He's gonna take our case। First of all, the trailer looks fab and it's the roller coaster of emotions. So my question is to Divya. Obviously, I loved your fashion sense in real life and also in real life. So what is your style statement and how do you always, are on point with your fashion game? I always believe in minimalistic, don't do too much. And also, I'm very petite, so nothing big suits me. It just overwhelms me. And I think comfort is the most important thing. I dress up according to my comfort and not according to any fashion or trend. And your skin also looks flawless. So any tips for flawless skin? I've also been asking her this for a lot of years. So we want to know. Good genes. Yeah, I guess my parents, yeah. Hi Divya. Hi. Hi Russell here from Hi, PTI. Russell, yes. Divya, the first यारिया 2014 में आई थी, काफ़ी बड़ी हिट भी थी. आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू उस फिल्म से हुआ था. 9 साल के बाद ये सेकंड फिल्म आ रही है.
it's really looking good. The trailer is looking fantastic. But इन 9 सालों में आपने कभी नहीं सोचा एक यारिया 2 खुद ही डायरेक्ट करने को? आई थिंक बहुत बार सोचा बट स्क्रिप्ट ही ऐसी नहीं मिली विच वुड डू जस्टिस टू इट एंड आई थिंक जब राधिका जी और विनय जी एक ऐसी स्क्रिप्ट लेके आए जहाँ पे कज़न्स की फ्रेंडशिप है आई फाउंड इट वेरी वेरी यूनिक एंड न्यू क्योंकि जनरली हम दिखाते हैं तो दोस्तों की फ्रेंडशिप दिखाते हैं बट कज़न्स की फ्रेंडशिप कभी स्क्रीन पर आज तक की हिस्ट्री में बॉलीवुड की स्क्रीन पे कभी नहीं आई है एंड यू नो आवर कज़न्स आर आवर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स जब हम छोटे होते हैं वी actually grew up with them and share everything, all our secrets with them. So the script was so amazing that we had to bring the Yaariyan 2 brand back. Pearl, एक सवाल आपसे भी है. Obviously, you have an insane fan following from TV. Like जैसे आपके डायरेक्टर साहब ने बोला था, TV superstar. And जब भी मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ, जो retweets, जो रीशेज आते हैं आपके फैंस से, it just blows up. Tell me one thing. Is this movie when it's like also a gift back to your fans ki you got a perfect Bollywood debut for all the Pearl V Puri fans out there? जी एब्सोल्युटली, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. दिस इज़ अ गिव बैक बेसिकली. उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा दिल करता है कि मैं सबके घर जाके उनको पर्सनली हक करके थैंक यू बोलूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है. मैं हक बहुत करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई वुड वांट टू थैंक यू ऑल. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए. मैं जो भी कुछ हूँ आप सभी की वजह से हूँ एंड प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिए. प्लीज़ हमारी यारियाँ 2 को बहुत सारा प्यार दीजिए. इसमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन आपको मिलेगा. प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइस. 2 questions और लेते हैं. I think we'll take 2 more questions. Hi Meezaan, this is Siddharth from Filmy. Hi, Siddharth. Firstly, congratulations to all of you. Such a beautiful, such an emotional trailer. Thank you. My question to you is, Yaariyan 2 is all about emotions, you know, bonds, friendship, relationship. What's your mantra of a healthy relationship? It could be any, with friends or cousins, with mom, dad, but just a relationship. I think to be truthful and honest and just be yourself in the process. I think the And reason you quiet. are... Sorry? And quite. Yeah. The reason is, I think someone knows you a certain way when they get into a relationship with you. That can be of any kind. So I think to be truthful to that image and what they expect from you and what they think of you is very important. And I think, yeah, that's it. Hi Meezaan, this is Farhan Khan. To your left. Hi Farhan, how are you? So this is Farhan Khan from Telechakka.com. How are you? First of all, congratulations to the entire team. Fantastic trailer. Thank you. And Meezaan, my questions to you is, it is always a treat to watch you or your craft on screen. But having said that, is there any dream role or character you are really looking forward to do, जो आपको अभी तक offer नहीं हुआ है? I think play a rock star. That would be fun and cool to do because I love music and I think that's a role that I would love to play. Yeah. Thank you. All right, one last question. Meezaan. Simpa ji, आइए. हाँ जी. So first of all, congratulations to the team. Thank you. This is Simran Singh here. मेरा सवाल आपसे मीज़ान आपसे भी है, पर्ल आपसे भी है, वरीना आपसे भी है, एंड दिव्या जी आपसे भी है. जैसे हमें सिबलिंग्स की बात करें, कजन्स की बात करें, so how much do you relate? मतलब अब होता ना कि जब हम फिल्म कर रहे हैं तो हमें अपने सिबलिंग्स याद आते हैं, कजन्स याद आते हैं. सच पर आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं. I think for me, I have a lot of cousins. उनमें सबसे छोटा मैं हूँ. तो बचपन में सबसे ज़्यादा खिंचाई और रैगिंग मेरी की जाती थी. But I have also a real brother and a real sister. So I could really relate with those emotions immediately on set because I have a brother in the film and a sister, which Divya is playing. So, you know, I could immediately connect those scenes and those situations and those circumstances because I had gone through that with my own siblings. And I think that is why I think also the audience or whoever's going to watch the movie, whoever has siblings or even cousins will immediately relate to these scenes and emotions that the directors have so beautifully created in the film. So yeah, anything? Paul, go ahead. Yeah, absolutely true. Like he said, हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने कज़न से बिकॉज हम उनके साथ पले बड़े होते हैं, हमने फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, बहुत सारे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमेशा मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कज़न्स के साथ जो फ्रेंडशिप हो सकती है अगर वो है डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज आपको पता है कुछ भी हो जाए आपके सीक्रेट्स कहीं नहीं जाएंगे. दे कैन बी योर सीक्रेट बॉक्सेस. अब कभी भी ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंड से कभी लड़ाई होगी तो आपको पता है कि यार ये बात तो गई, और अगर वो किसी को नहीं भी बताएगा तो कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड को ज़रूर बताएगा. तो कजिन्स किसी को नहीं बताते, तो यू कैन फाइंड दैट कंफर्ट इन देम एंड आई हैव फाउंड बिकॉज हम लोग जिस तरीके का रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं फिल्म के अंदर, आप सभी मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद अपने कजिन्स को ज़रूर मिस करेंगे. आप सभी को याद आएंगे अपने कजिन्स, और आप सब लोग एक बार मेरे कहने से एक बार उनको फ़ोन करके ज़रूर पूछिएगा कैसे हैं.
दिव्या I think when we are growing up, we have a very strong connect to our cousins. और जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ्स में बिजी हो जाते हैं और वो कनेक्ट कहीं टूट जाता है. But I think यारियां 2 will bring back that nostalgia कि we should, जब हम थिएटर से बाहर निकलेंगे फिल्म देखकर, तो I think the first call we are gonna make is to our cousins and we are gonna reconnect to them and restart that connection. So that's the beauty of the film, I feel. I grew up alone, so I cannot say anything. Sorry. We'll find you a cousin soon. Anyone interested? Well, No, I think. Coming. See, मेरे बचपन से कोई भाई बहन है नहीं, ऊपर वाले ने बहन दी नहीं, मैंने बनाई नहीं, and I think that's the reason my directors casted me as the husband and not the brother. Happy playing the husband, उसका experience है, तो कर सकता हूँ. All right. So on that note, we'll have to wrap it up. अच्छा पूछ लो जल्दी से आखिरी. फैजान एयर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. मेरा सवाल आपसे है, फिल्म ट्रेलर के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पे आपने बोला है कि कुछ अच्छा करने के लिए बुरा कर रहा हूँ. कभी रियल लाइफ में कभी आपने ऐसा किया है जहाँ पे? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बार होता है जब you have to take in the sacrifice and you have to sometimes hide the truth in order कि कुछ अच्छा हो जाए in turn, ताकि किसी को बुरा ना लगे. कई बार ऐसा होता है कि कई दोस्त को झूठ बोल दिया ताकि उसको दूसरे दोस्त का कोई गलत परसेप्शन ना हो या बुरा ना लगे. सो आई थिंक दैट डायलॉग अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. रिलेशनशिप में ही नहीं, आई थिंक कोई भी आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं वो. सो इट्स अ ब्यूटिफुल डायलॉग विच आई थिंक एवरीवन विल रिमेंबर आफ्टर द फिल्म एज वेल, रिटन ब्यूटिफुली बाय द टू ऑफ देम. के ऊपर पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने इसको बोला? आई थिंक कि बोलूं कैसे, बिकॉज मुझे पता था कि शायद ट्रेलर में आने वाला है ये डायलॉग. इट्स वन ऑफ दोज काइंड ऑफ डायलॉग्स व्हिच पीपल रिमेंबर व्हेन द मूवी कम्स आउट. तो आई थिंक करते वक्त तो यही डर रहता है कि आई होप कि मैं एक सर्टेन इंटेंसिटी या पावर से वो डायलॉग डिलीवर कर पाऊँ. और अगर अच्छा किया है, अगर आपको अच्छा लगा, इट्स ऑल थैंक्स टू सर एंड मैम. वाओ.